Good morning, Komal. Okay. So, in the last session, we had a discussion on वर्ल्ड इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स जो थे उस पे टोटल डिस्कशन हुआ था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फूड सिक्योरिटी. अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है. एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ले, बट फाइन, देन नो इश्यूज के पहले हम फूड सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग द टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स इन द वर्ल्ड दैट इज गिवन बाय द विटल से. ठीक है, तो विटल सी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो हम डिस्कस करेंगे, लाइक से इफ पॉसिबल टुडे और मे बी इन द नेक्स्ट सेशन. देन तो फूड सिक्योरिटी देखो. अच्छा चलो पहले कोमल एंड ऑल यू गाइस जस्ट डू रिकॉल दो स्टफ जो लास्ट सेशन में पहले हमने डिस्कस किए थे. मच नीडेड है रिवीजन. फूड सिक्योरिटी एंड फेमाइंस.
Okay, done. I think कल जो टॉपिक डिस्कस किया था तो यू आर ना डन विथ रिकॉल. चलो ठीक है. सो जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी, फूड फेमिन. नाउ सबसे पहले पीवाईक्यूज. फर्स्ट हैंड पीवाईक्यूज ऑन दिस टॉपिक. गेट इट नोट डाउन. Discuss critically food and nutrition problem. Discuss critically food and nutrition problem associated with. Discuss critically food and nutrition problem associated with developing countries. Associated with developing countries. 2023. Next question. Describe the role of accessibility. Describe the role of accessibility and affordability in the food security of the developing world. In the food security of the developing world. 2021. Next, analyze India's food security. Analyze India's food security in the context of population growth. In the context of population growth. 2020. Next, define stunting and wasting. Define stunting and wasting. STUNTING and WSTING. Wasting. Full stop. Why are this more सर prevalent? रिपीट कर दीजिए. Define stunting and wasting. Stunting and wasting. Why are this more prevalent? Why are this more prevalent among children in developing countries? Among children in developing countries? Question mark. 2019.
Next, food productivity. Food productivity with purity of ecosystem. Food productivity with purity of ecosystem is the need of the hour. Is the need of the hour. Elaborate. Food productivity with purity of ecosystem is the need of the hour. Elaborate. फोर्टीन वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे इन टॉपिक पे गिव एन अकाउंट ऑफ food security issues in India. Give an account of food security issues in developing countries. In developing countries. 2014. Write short. Next question. Write short explanatory note on. Write short explanatory note on population and food security. Population and food security. 2011. Population and food security 2011. ठीक है और भी क्वेश्चंस हैं बट मोर और लेस सारे इस क्वेश्चन के ही रिपीटिशंस है ओके चलो तो देखो ये PYQs है like those were asked in the examination and now तो पहले the first term that we should have pretty much clarity on right that while writing answer on this question ये तो much needed है that we should have a clear cut understanding about the definition of food security है ना food security nutritional security and all those aspects देखो क्या है now food security it is as defined by World Food Summit that it is a condition when okay it is a condition when every individual every or all forms of life having access to enough foods and nutrition all the times at all the places to remain active in all phases of its life देखो फूड सिक्योरिटी कैसे डिफाइन किया वर्ल्ड फूड समिट में ब्रॉड बेस्ड डेफिनेशन है वैसे इन 1996 इसको डिफाइन किया है एंड व्हाट डज दैट मीन इट सिंपली मींस द condition when the all people at all time at all places have easy efficient and affordable access to food to remain active in all spheres of their life this is what say like the definition of food security अब food security के then इसके वर्ल्ड बैंक ने 4 डिफरेंट डिमेंशंस आइडेंटिफाइड किया वर्ल्ड बैंक में अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इसकी 4 डिफरेंट डिमेंशंस आइडेंटिफाइड किए हैं जैसे देखो कौन से डिमेंशंस है ये फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फिजिकल availability of
food. Second, economic access to food. Economic access to food. Third is food utilization. Food utilization and food or simply stability. Food utilization and stability. So see, according to World Bank and this World Food Summit, फूड सिक्योरिटी ये जो डेफिनेशन है इसको फुलफिल करने के लिए आपके 4 डिफरेंट डिमेंशंस है जो वो भी फुलफिल होना इज इक्वली नीडेड. दैट फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, दैट फूड राइट, जो भी आप फूड ले रहे हो, इट मे बी वेजिटेरियन हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, ठीक है. इट मे बी लिक्विड डाइट, इट मे बी सॉलिड डाइट, इट मे बी लाइक एनी फॉर्म्स एज इन नो इश्यूज विद, बट दैट फूड शुड हैव ए राइट टाइमली फिजिकल अवेलेबिलिटी. What apart from right timely physical availability, economic access to food is equally matters a lot. Because अगर आपकी economic accessibility है ही नहीं, that you don't have enough economic potential to fulfill the very needs, okay, of say your own food requirements. In that case, because let's say world में बहुत सारे poverty ridden population है ना, they don't have enough capacity to procure the foods, okay, or to buy this enough amount of food and then ensure their food security or say food requirement, right? So economic access is equally important for being like in the food security situation. Third is the food utilization. अब फूड यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझो, ठीक है. देखो फूड यूटिलाइजेशन क्या होता है. फूड यूटिलाइजेशन इज अ कंसेप्ट कि जो आप फूड ले रहे हो, जो इंटेक है ऑफ द फूड, whether that intake is really getting transformed into nutrition or what your body actually requires. See, the thing is what happens many a times, it just because कि क्या है ना कि जैसे आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मे बी एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है बट फिर भी, जैसे मिल्क लिया हमने. अब मिल्क में वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम है या यू विल फाइंड वेरियस प्रोटीन्स है एंड न्यूट्रिएंट्स है. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ऐसे नहीं होगा इफ यू आर टेकिंग दिस न्यूट्रिएंट्स और मिल्क एज इन इट मींस यू आर गेटिंग एनरिच्ड योरसेल्फ विद ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. नो, बिकॉज से कैल्शियम या प्रोटीन्स इसको ब्रेक करने के लिए या इसको अल्टीमेटली बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए कुछ और एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, है ना. कि जैसे सिर्फ बाइक लोगे तो काम नहीं होगा, यू शुड हैव योर कैपेसिटी टू रिफिल इट्स पेट्रोल टैंक एज वेल ऑन रेगुलर बेसिस, है ना. सेम गोज विद द एलपीजी सिलेंडर. पीएम आशा योजना में क्या हुआ है, 25% ऑफ जो इंडिविजुअल्स है या जो जिन्होंने बेनिफिट लिया है, दे फेल टू रिफिल देयर एलपीजी सिलेंडर अगेन. अब यहां पर भी यही केस है दैट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम प्रोटीन तो आप ले रहे हो, बट इसको रिफिल करने के लिए या तो इसका बेसिकली यूटिलाइज करने के लिए देयर नीड सम फर्दर एलिमेंट्स. अगर वो एलिमेंट्स इफ यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, इट इज इक्वली हैविंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन the food security condition. So food utilization is very important dimension of the food security, right? I hope you are pretty much clear with. And stability, just like that, इट्स ओके विथ कि आपके पास फिजिकल अवेलेबिलिटी है, ठीक है. इट्स ओके विथ कि आपके पास इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी भी है. इट्स ओके इवन विथ द फूड यूटिलाइजेशन इज देयर, दैट व्हाटएवर यू आर टेकिंग यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग न्यूट्रिशियस, राइट, और व्हाट बॉडी रिक्वायर्स. But now the case is, say if it is that case, fourth issue, it matters a lot further. What in terms of stability? Stability on the count that the food security or food condition that is made available to you, it should have periodic or regular access to food. जैसे क्या हो गया, वेदर या क्लाइमेट चेंज हो गया. जैसे अभी मॉरिशियस में देयर वाज ए फर्स्ट क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फेमिन, राइट, और ड्राउट था. या अफ्रीका में देखो ड्राउट लाइक कंडीशंस चल रही है ना, तो वहां पे फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है. सो यू विल फाइंड क्या हो रहा है, इट जस्ट, और यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, वहां इशू है. इजराइल पैलेस्टीन तो बेस्ट एग्जांपल है कि
it is having physical accessibility, it is having food utilization potential, it is equally having economic access. But see, this economic access and all those conditions are not on very consistent basis. ये क्या हो रहा है, fragmented manner में हो रहा है. 15 दिन है, 15 दिन नहीं है, 15 days है, fortnight फिर availability नहीं है. तो क्या हो गया, you will find your body even loses this potential, you know, like say for conversion and all those aspects, utilization of the food, and thus stability of the food matters a lot. So I hope ये चार जो dimensions of the food security, physical availability, economic aspect, food utilization and stability of the food system, that matter, that you guys are now pretty much clear. Now इसके बाद देखो और भी एक dimension है, food security is equally 4 A's: accessibility, affordability, availability and absorption. See, more or less ये जो 4 dimensions अभी हमने डिस्कस किए थे ना, इकोनॉमिक एक्सेस, फिजिकल एक्सेस, देन फूड यूटिलाइजेशन, absorption itself, right? तो ये सारे जो ये 4 dimensions है, ये 4 A's of the food security है, where you will find कि food security is actually a result of this 4 things. अगर ये 4 things है available with the case of food, then that is what the food security कंडीशन और फूड सिक्योर कंडीशन. क्लियर है कोमल, क्लियर है? यस ठीक है. तो अब इसके हमको डेफिनेशन लिखने और कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. अकॉर्डिंग टू, और सी, हाँ, कीप द हेडिंग फूड सिक्योरिटी एंड बेस्ड ना, उसके अंडर में लिखना है बेस्ड ऑन दी 1996 World Food Summit. Highlight it. Based on the 1996 World Food Summit, comma, food security is defined as कैपिटल में लिखो इसको, when all people, comma, at all times, comma, have physical and economic access, ACCESS, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food, to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs, and food preferences, dietary needs and food preferences for an active and healthy life. For an active and healthy life. Full stop. The 4 main dimensions of, ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन में लिखना,
The four main dimensions of food security are: first, physical availability. Physical availability. इसी में लिखना डैश देकर, it addresses the supply side of food security. It addresses the supply side of food security and is determined by and is determined by the level of food production, is determined by the level of food production, stock levels, stock levels, and net trade, and net trade. Second, economic and physical access to food. Economic and physical access to food. इसमें लिखना, an adequate supply of food, an adequate supply of food does not itself guarantee, does not itself guarantee household level food security. Household level food security. There should be a greater policy focus, a greater policy focus on incomes, expenditure, incomes, expenditure, markets and prices, market and prices, in achieving food security, in achieving food security. Food utilization, food utilization. It is understood as, the body makes
The most of various nutrients in the food. The body makes most of various nutrients in the food. Sufficient energy and nutrient. Sufficient energy and nutrient. सर चौथा पॉइंट नहीं नहीं, इसी में फूड यूटिलाइजेशन में ही है. Sufficient energy and nutrient intake are the result of better food utilization. Better food utilization. Fourth point. Stability of fourth point अभी है. Stability of other three dimensions over time. Stability of other three dimensions over time. नेक्स्ट लाइन इसमें, अब इसमें ये कंप्लीट हो गया फोर्थ पॉइंट. ठीक है, अभी इसमें लास्ट लाइन इसमें. फॉर फूड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड. फॉर फूड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, all four dimensions must be fulfilled. All four dimensions must be fulfilled. And then draw this diagram. Accessibility, availability, affordability and absorption. 4 A's of food security. ठीक है, ये वैसे अभी चार जो एक्सप्लेन किया हमने इसी का ही है. Absorption means utilization of the food. फूड यूटिलाइजेशन. अवेलेबिलिटी तो फिजिकल एक्सेस में आ गया. अफोर्डेबिलिटी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आ गया. और एसेसिबिलिटी ये एक थोड़ा सा डिफरेंट डिमेंशंस है. तो ये जो इसमें इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं विद दी स्टेबिलिटी. ठीक है, तो अभी जो 4 डिमेंशन लिखे है इसी का ये 4 एज भी है. तो यू कैन व्हाइल राइटिंग आंसर यूज दिस 4 एज एज वेल. ठीक है, चलो कर लिया ड्रॉ. तो फिर अब हम पीपीटी पे जाते हैं और देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इंक्लूड्स.
ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, देखो वैसे इसके लिए तो अगर इफ यू फाइंड अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में इसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, राइट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, तो वहां पर भी डिस्कस किया। और इन आवर एंशिएंट लिटरेचर एज वेल यू विल फाइंड फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा मतलब डिस्कस भी किया है, मेथड्स एज वेल स्ट्रेटेजीज वेर मेंशन। Now, one again a scholar that we will be discussing in population and settlement geography, where one scholar, Robert Thomas Robert Malthus, he was he presented his thesis, an essay on population growth in 1798, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, उसने पॉपुलेशन और फूड रिसोर्सेस, ठीक है, उसने पॉपुलेशन और फूड रिसोर्सेस इनके बीच का रिलेशनशिप बताया था कि how this population growth and resource availability mainly like a food security, see they are interrelated, कि अगर population growth increase होगी so there is what a decrease in the food security or food that is being made available to every individual, and if food security is there, right, population growth should be then under control. So Robert Thomas Malthus, Thomas Malthus, he was basically an individual that साइंटिफिकली प्रपोज्ड कि फूड सिक्योरिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इंटर रिलेटेड, जिसमें देखो 2011 में क्वेश्चन भी आया है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी वाला 2011 वाला क्वेश्चन है, तो ये इसको आप कनेक्ट कर सकते हो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग पॉपुलेशन ज्योग्राफी इटसेल्फ, ठीक है। सो food and nutrition are interrelated issues. You cannot consider food as a different thing and nutrition as a different thing. No, food and nutrition, they both are interrelated. They are intimately related with each other, in fact. And food shortage leads to nutritional deficiency. According to Brock, प्रेजेंट वर्ल्ड हैज नो फूड शॉर्टेज। देखो अब इसमें एक और ब्रॉयक का एक ऑब्जर्वेशन है कि प्रेजेंट वर्ल्ड जो है उसमें न्यूट्रिशनल या फूड सिक्योरिटी पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि world has enough capacity to produce 450 gram per day per individual, राइट, कि हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ इन द वर्ल्ड इवन कि जो हर किसी इंडिविजुअल को कितना 450 ग्राम पर हेड पर डे जस्ट कैन बी प्रोवाइडेड। इट मींस कि फूड सिक्योरिटी या फूड अवेलेबिलिटी ये इशू नहीं होना चाहिए, बट द थिंग इज व्हाट कि ये अदर डिमेंशंस है जो इंपैक्ट कर रहे हैं। इट मे बी लाइक वॉर, इट मे बी लाइक party, it may be like unemployment, it may be like government discrimination, it may be like again inaccessibility, the lack of capacity in individual to utilize this food. तो क्या हो रहा है, इवन दो इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड दैट इज बीइंग मेड अवेलेबल टू यू, यू आर लाइक फेल टू एंश्योर, राइट, नेचर ने तो आपको अवेलेबल करवा दिया है, बट यू ऑन योर ओन ड्यू टू सम मैनेजमेंट एंड ड्यू टू सम डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिसेस फेल टू प्रोवाइड say to food security to every individual, and that is what this case of food and nutritional problem. In 1984 sub-Saharan countries are not getting enough rainfall. They have become famine state, ठीक है, famine मतलब एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है जहाँ पे फूड की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो ये जो फैमिन्स होते थे यू विल फाइंड कि दे आर ऑलमोस्ट रिस्पांसिबल फॉर द डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल, 5 मिलियन 10 मिलियन और इवन मोर, तो इतने सारे इंडिविजुअल्स के डेथ वो डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड फूड, यूएस बीइंग द प्राइमरी एक्सपोर्टर टू देम, सो दैट वे। सो इंडिया, अब इंडिया का केस हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे। इंडिया इज अ कंट्री विद अ हिडन हंगर प्रॉब्लम, या इसके लिए देखो दो इंडेक्स है। व्हाट इज नाउ टास्क फॉर यू, यू विल बी लुकिंग फॉर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसपे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है,
और जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया है on this global hunger index because India is performing so poor right on this index like scale, and government of India is like not absolutely not in favor, just about the methodology, about the rank and every the way that this hunger index is calculated. So this general problem in developing countries, so the most problem is of hidden hunger itself, है ना. Hidden hunger is one of the major problem. अब hidden hunger क्या होता है? It is simply a condition that you even fail to recognize what is say the level of hunger in your country. Then another problem is of distribution of food, जो हमने already देख भी लिया है कि what physical access या इसका जो distribution है that is inefficient. It is both international and international. In US and Canada there is enough food, but sub-Saharan countries, South Asia are facing this problem of starvation. A lot of political bargaining goes into the process, and disadvantaged countries have to compromise on the issues such as nuclear waste डंपिंग. अब क्या करेंगे, ये सिंपल है कि जैसे कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है या रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो या ई वेस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर डेवलप कंट्रीज फूड तो प्रोवाइड करेंगे, बट इन एडिशन दे विल मेक यू और लाइक फोर्स्ड राइट जस्ट टू एक्सेप्ट देयर डंप एज वेल राइट. तो फिर इसीलिए अफ्रीका में, साउथ एशिया में या एशिया में आप देखोगे ई वेस्ट बहुत ज्यादा है, या इवन यू विल फाइंड न्यूक्लियर वेस्ट का डंपिंग हो रहा है. तो बहुत सारे केसेस है कि जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन इनएफिशिएंसी और इनसिक्योरिटी इज रादर लीडिंग टू. कल मैंने एक पॉकेट टॉपिक शेयर किया था, अगर आपको याद हो, वुमन विमेन्स एंड वाटर इनसिक्योरिटी, है ना, वीमेन्स एंड वाटर इनसिक्योरिटी. तो ये मैंने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वहां पे. वैसे ही कनेक्ट कर सकते हो वीमेन एंड फूड सिक्योरिटी, वीमेन एंड सॉरी दी पॉपुलेशन एंड फूड इनसिक्योरिटी. इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कौन से राइट्स वायलेट्स हो रहे हैं, एंड एवरी अदर डिमेंशंस एज वेल. देखो, अब एक और कंसेप्ट है दैट यू गाइज मस्ट बी अवेयर अबाउट, जो मैंने टास्क दिया था, ए फूड डेजर्ट. ठीक है, अब फूड इनसिक्योरिटी का जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, ओके, और न्यूट्रिशनल ड्राइनेस होगा, दैट कंडीशन इज फूड डेजर्ट. इट इज एन एरिया विथ लिमिटेड एक्सेस टू हेल्दी एंड अफोर्डेबल फूड. It is simply healthy and affordable food की deficiency है over in the food desert. In the United States, the term food desert has become a common way of describing rural or urban areas where fresh produce and public transportations are limited, due to which the food is getting nutritionally dry. ठीक है, न्यूट्रिशन ड्राई मतलब ऐसा नहीं कि ड्राई हो रहा है, बट इट मींस कि उसमें न्यूट्रिशन का जो इफिशिएंसी है वो उतनी नहीं है, एंड ड्यू टू विच यू विल फाइंड कि मेनी टाइम्स लाइक जंक फूड्स है, वो भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि पिज्जा है या बर्गर है. सो दिस आर व्हाट इज जंक फूड्स एंड दे आर व्हाट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज, राइट. In such a case, see, food desert is rather a कंसेप्ट. और देखो, फूड डेजर्ट का फिर यहाँ पे मैप बनाया है, रेड वाला जो केस है वहां पे यू विल फाइंड कि फूड डेजर्ट्स आर रादर गेटिंग डेवलप. मंगोलिया वाला या अफ्रीका का सब सहारन रीजन है, कुछ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस वाले रीजन में भी यू विल फाइंड दैट इज अवेलेबल. ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना. अब फूड डेजर्ट के लिए देख क्राइटेरिया क्या है, देखो आई हैव जस्ट गैदर दिस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है इफ यूपीएससी वांट. तो फूड न्यूट्रिशन पे पूछा है, तो फूड डेजर्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. देखो क्राइटेरिया, लो इनकम नेबरहुड, कि यहाँ पे इनकम जो है वो कंपैरेटिवली कम है, लो इनकम ग्रुप है, पार्टी रिडन. फूड डेजर्ट इज इक्वल देयर, लो इनकम एरिया विथ एटलीस्ट 500 पीपल और थर्ड ऑफ the population, ठीक है, and limited motor vehicle access. So these are what the food desert criteria, जो इसको अभी बहुत यूनिवर्सल कंसेप्ट तो नहीं है, यूएस में इसको ऐसे डिफाइन किया है. ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, पूरा मत लिखना, वैसे ये वाले पॉइंट्स यू गाइस आर नॉट सपोज टू, सिर्फ हाईलाइटेड जो टर्म्स है बस वही आपको लिखना है. देन व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ फूड
इनसिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। देखो फूड सिक्योरिटी के डिटर्मिनेंट्स अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1995, according to World Development Report 1995, presented an entire article titled Overcoming Global Hunger. Overcoming Global Hunger, written by the World Bank. ओके, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने लिखी है और उसके अकॉर्डिंग से देर आर थ्री क्रिटिकल फैक्टर्स। ओके, देर आर थ्री क्रिटिकल कॉजेस और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड इनसिक्योरिटी और थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। First factor is political factor. See, political factor. What it means by political factor? It means that, see, the political consideration, जैसे अभी हमने देखा कि developed worlds, are no doubt they are providing or granting you the aids of food and nutrition security. But in addition, they are creating a subsequent problem of, say, further poor insecurity in the future. Even political crisis like that is going on in Israel and Palestine, Russia and Ukraine, or maybe in any other part of the world, जैसे कि अफ्रीका में तो ये तो इंटरनल राइफ तो सिविल वॉर तो चलता ही रहता है. So these political issues are actually leading to the problem of food insecurity all across the globe. Apart from the political factor, next है social. See, social factor in a sense what? कि even if food is being made available to you as a group, अब उसमें क्या है, ग्रुप में आपके बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस है या ग्रुप में बहुत सारे पार्टीशंस है. फॉर एग्जांपल, लाइक इवन इन सोसाइटी the strata is there on term, on the basis of monetary earnings or monetary status. Rich and poor, देखो इनमें क्या हो गया, फिर से डिफरेंस बन गया. Even you will find social, you will find SC ST, जैसे हमारे इंडिया में अगर कंसीडर करेंगे तो you will find forest dwellers are having comparatively less access to food, है ना, लेस पुअर ऑन न्यूट्रिशन. से अगर अंडमान निकोबार के ट्राइब्स देखो तो देखो इनके साथ केस है, या पीवीटीजीस वाले ग्रुप है इनके साथ ये केस है. नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में ये कुछ प्रॉब्लम्स है. सो सोसाइटी, इवन यू विल फाइंड इन सोसाइटी, यू विल फाइंड वीमेन्स एंड चाइल्ड आर कंपैरेटिवली पुअर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, बिकॉज सी पैट्रियार्कल माइंडसेट में वीमेन्स आर एनीवे कंसिडर्ड इंफीरियर. आपने आपके फैमिली में भी देखा होगा, राइट, व्हाट कि वीमेन जनरली प्रीफर करेगी आफ्टर हैविंग लाइक व्हाट मेल आर डन विद देयर व्हाट लंच और डिनर, राइट. तो उनका होने के बाद यू विल फाइंड दिस फीमेल्स आर बेसिकली व्हाट having their food intake, and due to such a practice, फिर अब जो बचा हुआ होगा या कुछ कम क्वांटिटी में होगा या जो भी कुछ होगा, you will find the women's are at comparatively a backstage, comparatively at a backstage. So social discrimination is further leading to, or social problems are further leading to food insecurity. And third is economical. Now, what does that mean by economical? It means simply economic access, economic potential to your society. Okay, economic potential to to have accessibility to the food that is periodic and that is stable. This is equally not, say, ensured, and then it leads to the problem of global hunger or food insecurity. आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको समझ आ रहा है. इसके बाद भी एक पॉइंट है जो कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, कि विच आर दोज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और लीडिंग टू ग्लोबल हंगर. देखो, rapid growth of population, like who wants better and nutritious food, are equally factors है कि जहां पे भी सोसाइटीज में ग्रुप बनेंगे और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसमें क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल, डिजास्टर्स आर इक्वली प्रॉब्लमेटिक. टोपोग्राफी ऑफ द रीजन दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज से दो वर्ल्ड इज ऑक्यूपाइड बाय 40 or 50% बाय द प्लेन, स्टिल नॉट एवरी प्लेन, ओके, इज एग्रीकल्चरली फर्टाइल
और प्रोडक्टिव। द रीजन बीइंग, इसके साथ बहुत सारे केसेस है, कोस्टल सैलिनाइजेशन है या ग्लेशियर कवर्ड है या स्नो कवर्ड है ना, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड दैट इट फर्दर लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी यू विल फाइंड lack of food production, lack of diversification in food production, like particularly जैसे इंडिया में मेजर फूड क्रॉप्स दो सीरियल्स क्रॉप्स है, एक राइस और एक व्हीट। मेजोरिटी हमारा एरिया राइस और व्हीट को है, बाकी फिर एरिया कंपैरेटिवली डिक्लाइन होता चलता है, राइट। अब इन सच अ केस यू वोंट फाइंड ए डिवर्सिफिकेशन एंड न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे हैड कॉइंड ए कंसेप्ट ऑफ थालीनॉमिक्स। सो थाली इन अ सेंस व्हाट, कि एक जो डाइट होना चाहिए आपका, लाइक इट शुड बी कंप्लीट थाली। It should have proper vegetables. It should have a proper, rice, and there's additional what, और इसको क्या बोलेंगे, additional intakes, like say you'll find curds है, या basically pickles है, या जो भी कुछ additional nutrients है, fruits है. Your thali should include the every dimensions or every nutrient that you require, right? इसीलिए food diversification is equally a important issue जो कि एड्रेस नहीं हो रहा है। फिश, मिल्क, मीट, मटन and also fruits, vegetable, forest food products needs to be supported in a sense that ये products are not equally available। अब जैसे कि अगर आप देखोगे PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इन इंडिया, इसमें हमारा फोकस है लोगों को राइस प्रोवाइड कर दो, लोगों को व्हीट प्रोवाइड कर दो, इट मींस कि खाना हो गया। नो, द थिंग इज राइस एंड व्हीट इट मे इंश्योर ए क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन or quantity of food to you. It does not ensure quality of food, say, that is supplied to you to help you to remain active in all spheres of your life, है ना। सिर्फ राइस और व्हीट खाओगे तो सिर्फ क्या होगा, पेट भरा हुआ सा रहेगा, या क्वांटिटी ऑफ फूड इज रादर देयर। It does not include the quality or nutrition status of the food intake. So that way एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो पुअर है। ट्रांजिट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, एपिडेमिक्स, डिजास्टर्स, inability to invest in agriculture, and low purchasing capacity of the people, economic reason. So these are what different factors are. Those are responsible for global food insecurity and related issues. तो आई थिंक इसके कॉजेस आपको क्लियर है प्रीटी मच। और देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट है। अच्छा, एक हाँ, इसका सोल्यूशन क्या होगा अगर ये प्रॉब्लम्स है तो। अच्छा, वर्ल्ड में इसके कुछ पॉकेट्स है, रीजन्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। वर्ल्ड में इसके कुछ रीजनल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। स्पेशल इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड इन अ सेंस कि वर्ल्ड में देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज आइडेंटिफाइड और डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू 3 जोन्स, जिसमें जैसे लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन इंटेक वाले साउथ एशियन कंट्रीज है और अफ्रीकन कंट्रीज है। मीडियम कैलोरी इंटेक एंड मीडियम प्रोटीन इंटेक includes the European countries, Russia, Africa, Egypt, Portugal, Spain, Turkey, Brazil, Chile, Argentina, and other countries. And high calorie and high protein intake includes US, Canada, Mexico, Israel, साउथ कोरिया एंड दोस कंट्रीज, राइट। तो इसमें क्या है ना, विल फाइंड कि वर्ल्ड में फूड इंटेक के बेसिस पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज रादर ऑब्जर्व्ड, है ना। स्पेशल फूड इनसिक्योरिटी, वेयर हाउ दिस इनसिक्योरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द अर्थ सरफेस और ग्लोब, दैट इज व्हाट अगेन पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। और फिर देखो यहाँ पे, अब जैसे हेड काउंट पर पावर्टी होगा, अकॉर्डिंगली फूड इनसिक्योरिटी का भी एक कनेक्ट होगा, दो इट इज नॉट दी सोल क्राइटेरिया जिससे आप फूड इनसिक्योरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर भी देखो। अब सब सहारन अफ्रीका मतलब कौन सा होता है पता है, जो सहारा से अदर अफ्रीकन पार्ट है, ये सहारा वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा ये है सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका में 50% ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर। अब जब ये पॉपुलेशन पुअर है तो यहाँ तो अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं, अगर एक्सेसिबिलिटी दे भी दोगे देन इवन दे डोंट हैव अफोर्डेबिलिटी, say for the case of food security, and that it leads to. Then the next region is South Asia, 40%, East Asia and Pacific, Latin America and the Caribbean, Europe and Central America, और यहाँ पे तो comparatively you will find
लो फूड इनसिक्योरिटी। यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, जीरो तो नहीं है बट कंपेरेटिवली लेस। लो फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो दिस आर व्हाट दिस लाइक दिस इज व्हाट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। अब इसका लास्ट पॉइंट जो देखो देखो करेंगे हम, मे बी सॉल्यूशंस फॉर दिस केस ऑफ food insecurity. What we should do then to control or to manage the food insecurity? Just go through this solution, guys. यही है जो प्रॉब्लम्स है, बस उसी को कनेक्ट करना है एंड वी नीड टू देन प्रोवाइड सॉल्यूशन। चलो, आई थिंक सॉल्यूशंस आपने देख लिए इसके कि और क्या सॉल्यूशंस है। अब देखो सिनेरियो इन इंडिया क्या है, जस्ट दिस इज ओनली वन स्लाइड। सिनेरियो इन इंडिया क्या है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फूड population and economics, and India is in fact like a food secure, but many areas are having say the problem of food insecurity. अब इस पे कुछ कंटेंट लिख लो इंडिया फूड इनसिक्योरिटी पे।
हाँ, food and nutritional security in India. Write this heading. Food and nutritional security in India. On the front of quantitative availability of the food. On the front of quantitative availability of the food. India has enough food per capita. Enough food per capita or per individual. We are in fact largest producer of rice, wheat, pulses, millets, and various fruits and vegetables. However, the problem lies with equitable distribution, comma, its affordability, its absorption potential, bracket लिखो malnutrition, and accessibility. Next line. In actual sense, India faces a double burden of malnutrition. At one end, despite making great progress, a significant population or significant Indians exhibit nutritional deficiency. Next, उसी मतलब पॉइंट है, as in the National Family Health Survey, comma 2019-21 National Family Health Survey 2019-21, 35% of children are stunted. 35% children are stunted.
57% women, 57% women, and 25% men, and 25% men are anemic, are anemic. Are anemic. On the other hand, on the other end, due to imbalanced diet, due to imbalanced diet and lifestyles, and lifestyle, and lifestyle, 24% adult women, 24% adult women, and 23% men, and 23% men are obese, OBESE, are obese. Are obese. So this is what a problem of nutritional security in India. Nutritional and food security in India. ठीक है, चलो तो this PPT will be forwarded to, एक और क्विक टॉपिक कवर कर लेते हैं अभी, 10 minutes we are still left with. तो ये टॉपिक है हमारा फैमिन, और जिसको हम बोलेंगे फेमाइंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है, फैमिन्स और फेमाइंस. सी ये भी एक सिलेबस का पॉइंट है, तो इसको क्विक डिस्कस करते हैं. देखो ये इमेज, इट वाज लाइक इन 1930s itself, ठीक है, 1930s की है, इंडियंस की है, एंड यू कैन सी दोज the living skeletons themselves, है ना. It just because कि these individuals are like they were suffering with the extreme food scarcity, extreme, right. फूड सिक्योरिटी तो फिर भी ठीक है कि आपको फूड मिल रहा है कुछ कंडीशन में, है ना. तो फैमिन इज लाइक एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी कंडीशन, कि जहां पे यू डोंट हैव इवन अ बेसिक एक्सेस टू फूड. Okay, you are not even having it one single time food supply, and that is not a case for a single day. It is rather staged for a significant amount of time, maybe ranging for 1 2 3 4 5 years, right. ऐसे केस में जब होगा, you will find the result are like a living skeletons. Okay, so famines, अब famines को देखो define क्या करेंगे, कैसे करेंगे. According to US ed, famine is a catastrophic food crisis that results in widespread acute malnutrition and मास मोर्टेलिटी इवेंट. मास मोर्टेलिटी मतलब इसमें डेथ अगर देखोगे, अभी अभी कुछ फिगर्स देखेंगे, 1 million इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है, उस हिसाब से अब डेथ फिगर कितने बनते देखना. इट इज अ प्रोसेस देन रादर देन एन इवेंट. इट इज नॉट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे क्या होगा, फेमिन आया और चला गया, जैसे साइक्लोन आया है 2 दिन था और चला गया, है ना. अर्थक्वेक आया है कुछ सेकंड रहा और चला गया. नो,
It is not an event. It is a process in itself. It may drain, it may stretch for few years as well. And that is what a major point of concern with a beginning. See, it is a process rather than event with a beginning, a middle, and an end as well. और else वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या डिफाइन किया इसको? इट सेज famines occurs when a serious food crisis is made worse by government's failure to deal with the situation. That government somehow failed to deal with the situation, and the result is, say, food insecurity. The International Famine Center defines famine as follows. Famine may be seen as the regional failure of food production. Okay, regional failure of food production or distribution systems leading to sharply increased mortality due to starvation and associated disease. Due to starvation and associated disease. So this is what the definition of famine. बहुत ज्यादा severe conditions है about food security and availability leading to mass mortality. देखो अब इसकी characteristics क्या है? How famines are actually characterized by? See, famines, severe food shortage is there. Second, widespread death, mass mortality event. जिस वजह से माइग्रेशन भी होगा. You will find malnutrition is rather much common over here. Malnutrition. Then crop failure leading to nationwide insecurity of the food, and party with various social disorganization. So party, crop failure, malnutrition, mass mortality events, and the severe food shortage. ये कुछ characteristics है, and if they are draining for a particular period of time or a longer period of time, that is what a famine. नेक्स्ट इसके कॉजेस देखो क्या होते हैं. अब कॉजेस मतलब क्या है? हर किसी रीजन के लिए अपने कॉजेस है. एरियल डिफरेंशिएशन दैट और रीजनल ज्योग्राफी. दैट अफ्रीका के फैमिन्स आने के पीछे बहुत अलग रीजन्स है. एशिया में फैमिन्स आने के पीछे कुछ और रीजन है. साउथ अमेरिका में फैमिन्स आने के पीछे कुछ और रीजन है. इनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट है. जो फैमिन्स साउथ अमेरिका में आते हैं वो इतने इंटेंस नहीं होते, नॉट इवन इन साउथ एशिया, right? And those famines in Africa are rather, highly debt toll taking. तो जैसे कि अभी अफ्रीका में कोंगो में you will find famine है, या मैडागास्कर में है. तो उस केस में देखो the factors of African famine, climate uncertainty. The case is due to climate change event, due to insignificant rainfall, due to the problem of desertification and related issues. क्या हो गया? You will find यहाँ पे production कम हो गया, and that leads to the famine. इसकी case study देखेंगे मैडागास्कर वाली. Then party, tribal culture, lack of government effort to transform agriculture, because government is anyway despotic government है, government is anyway authority in government है, government is anyway unable to ensure or fulfill the basic needs and rights of the individual. So that one. And food politics is anyway that is prevalent in the world. So अफ्रीका के लिए अगर प्रॉब्लम देखोगे तो अफ्रीका फैमिन जनरली आता है, मतलब बाकी भी कंट्रीज में ऐसे ही रीजन से आता है, बट मे बी सम रीजंस आर डिफरेंट. Tanzania, 88% of population is rather prone to famine conditions. Liberia, Burundi, Rwanda and Mozambique. See, these are those regions है, या ये सारे साहिल वाले पार्ट है जहां पे famines का ज्यादा और रिपीटेटिव occurrence है. अब इसकी केस स्टडी मैंने ऐड की है 2022 मैडागास्कर famine. That is a case study. The climate crisis जो पहले हमने लिखा था, climate uncertainty, prediction are turning out to be true in Madagascar. Droughts have increased in the last 5 years, and the current one is the worst in the last 40 years. Current one in the sense 2022 wala is the worst in last 40 years. The situation is particularly serious in the south of the island, where farmers lost most of their rice crops in October, a key month for the growth of the cereal, when rainfall was 50% less than the usual average. Can you imagine? 50% less hai than the expected average, and that is so severe deficiency. Or obvious hai, it would lead to a drought-led famine then in Madagascar.
ओके अब तो खैर यूनाइटेड नेशंस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से तो उसके हेल्प से तो कुछ हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, बट स्टिल देर आर ए नेचुरल हिंड्रांस और लिमिटेशन जस्ट टू डील विद द फार्मिंग। देन साउथ एशिया का केस अगर देखोगे तो साउथ एशिया में फैमिन आते हैं, जैसे कि you'll find in बांग्लादेश, इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान और मे बी सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार, है ना, रीजन में फैमिन्स आते हैं, जो अब इतने कॉमन तो नहीं है। इंडिया में भी इतने फैमिन्स तो हमने खैर अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे पास तो फैमिन्स आते हैं नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, थैंक्स टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि फैमिन्स वाला क्वांटिटी वाला इशू हमारा सॉल्व हो गया। इट्स नॉट, बट क्वालिटी वाला इशू आज भी परसिस्टेंट है। So droughts and floods, low income and adequate transformation, social factors of discriminations. Right, famine is a social problem of South Asia. Amartya Sen, according to him, famine, जो कि वैसे अब तो जनरली हम क्वांटिटेटिव टर्म में देखते नहीं है इसको, बट famine is rather a social problem because social discrimination creates a famine condition, है ना, कि अगर किसी कम्युनिटी को परसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फूड मिल ही नहीं रहा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, एसटी, एससी, वीमेन, चाइल्ड और डिसेबल्ड, है ना, और दोज बेसिकली जो इंडिविजुअल्स है व्हाट हैविंग पार्टी रीडन पीपल, राइट, तो ये सारे इंडिविजुअल्स क्या है, ये फैमिन के स्टेट से जा रहे हैं, दो वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट कंडीशन, बट या दे आर गोइंग थ्रू ए हिडन हंगर, दे आर गोइंग थ्रू ए सीवियर फूड डिफिशियंसी। तो इस देखो साउथ एशिया में कुछ ये प्रॉब्लम्स है जो लीड कर रहे हैं टू दी फैमिन लाइक कंडीशन। इन साउथ ईस्ट एशिया ये वाले कुछ रीजंस है, जैसे ड्राउट्स एंड फ्लड है, लैक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पार्टी। साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज जो है, ठीक है, वहां पर ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न एशिया, ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न नॉर्दर्न एशिया मतलब चाइना, मंगोलिया, साइबेरिया, उस वाले रीजन में से this is the area of drought and famine. The worst affected country is North Korea, which witnessed the worst drought in 1996. A large number of the population is affected by poverty in this country. ठीक है, तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न चाइना, सॉरी एशिया, सेंट्रल एंड इंडियन अमेरिका, देखो इसके अपने रीजंस है, जैसे नेचुरल हैजार्ड्स, क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी, ट्राइबल सोसाइटी, लैक ऑफ अल्टरनेटिव इकोनॉमी, ऑल लीड्स टू दिस फेमिन। ठीक है, अब मैंने क्या, मैं तो देखो इसको कर तो मैं ये भी सकता था कि हर किसी कंट्री के लिए, रीजन के लिए एक ही रीजंस डाल दूं, बट व्हाट आई ट्राइड फॉर के हर किसी रीजन के अपने रीजंस आइडेंटिफाइड हो, जिससे हम एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल ज्योग्राफी वाली कंसेप्ट बेस्ट समझ पाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई से दिस दोस पॉइंट्स आर बीइंग एडेड। देन इंडिया में फैमिन्स देखो, इंडिया में फैमिन्स बहुत ज्यादा फैमिन्स आया है। यू विल फाइंड फैमिन इन 1943 बंगाल, वो भी वर्ल्ड फेमस फैमिन है। देन 1783 इन चालीसा, 1770 ग्रेट बंगाल, देन 1791, देन फैमिन, इसका नाम ही देखो स्कल फैमिन है। स्कल फैमिन मतलब इस टाइम फैमिन इतना ज्यादा इंटेंस था दैट literally living skulls were like roaring around on the roads और इन दी रूरल लैंड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्कल फैमिन्स। देन फैमिन्स ऑफ 1866 ओडिशा, एंड सारे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किए। एंड फैमिन्स का, द ग्रेट बंगाल फैमिन, हाउ ब्रिटिश किल्ड 10 मिलियन इन बंगाल फॉर प्रॉफिट्स। आर यू गेटिंग? 10 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन इट मींस 1 करोड़ इंडिविजुअल, ये भी शायद ऑफिशियल फिगर होगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि इतने सारे इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है ड्यू टू वन सिंगल फैमिन इंसिडेंट। आज तो देखो कोविड में हमारे पास डेथ ही ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो डेथ हुई थी वो हार्डली यू विल फाइंड 5 मिलियंस होगी या 10 मिलियंस होगी, राइट, बट यहाँ तो सिर्फ बंगाल में 10 मिलियन वाज अ डेथ टोल, राइट, फॉर द 1943-46 बंगाल फैमिन। तो दैट इज वेरी सीवियर अमाउंट और ग्रेट गेट टोल, डेथ टोल। तो अब इफेक्ट ऑफ फैमिन्स क्या है, तो एक जो थ्योरी है हम जो इसको डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल और रेस टू ऑब्लिवियन, द पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी, पॉल एरलिश की थ्योरी है, विच द बुक वाज पब्लिश इन 1978, और इसमें क्या दिया है हम इसको पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी में तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लो, रेमेडीज ऑफ द फैमिन्स, एक बार इसको गो थ्रू करना यू गाइस।
ठीक है, देख लिया इसके ये सॉल्यूशंस है, तो इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना. आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ एज वेल विथ यू. सो देखो पीपीटीज अपलोड हो जाएगी कुमल ऑन द क्लास लिंक इटसेल्फ. ठीक है, इस लिंक पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना इसको. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. वी आर डन विद द फूड सिक्योरिटी एंड द फूड फैमिन. तो हम इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो यू विल बी हैविंग ए टेस्ट ऑन फिजिकल सेटिंग्स, फिजिकल ज्योग्राफी. तो वहां पे करना 10 क्वेश्चंस विल बी देयर. 120 मार्क्स की टेस्ट होगी, 90 मिनट्स का होगा. फाइन, तो वो टेस्ट अटेंड करना है आपको. और लास्ट क्वेश्चन जो होगा 20 मार्क्स का होगा. ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, एक बार उसको वेरीफाई कर लेना. तो दैट वे यू गाइज आर सपोज टू अटेम्प्ट जिसके एग्जाम. ठीक है, और टेस्ट. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. Thank you for your active and alert participation. All you guys watching recording.